नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं। शहर की खबरों की ओर रुख करें उससे पहले आइए डालते हैं नजर कोरोना के आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करते हैं विश्व की। विश्व भर में कोरोना के अब तक 7 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 99,33,000 के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2,29,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। यह थे कोरोना के आंकड़े और आइए अब डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। स्थानीय स्वराज चुनाव की रणनीति जुटी। कांग्रेस गुजरात प्रदेश महिला अध्यक्ष के साथ की अहम बैठक। एमएसयू में कॉमर्स के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे पाने से किया हंगामा। परीक्षा रिशेड्यूल करने और समय बढ़ाने की मांग। और वडोदरा पुलिस ने 3 साल की बरामद की हुई 75 लाख की अवैध शराब को किया नष्ट। महानगर पालिका के चुनाव के अटकलों के बीच राजकीय गतिविधियां तेज हो गई है। आज वडोदरा में चुनाव रणनीति तय करने महिला कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। फरवरी में स्थानीय स्वराज के चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में राज्य चुनाव पंच ने भी अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। तब सभी राजनीतिक पार्टियां भी अपने चुनावी रणनीति में जुट गए हैं। आज इसी के मद्देनजर महिला कांग्रेस की बैठक पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव के घर आयोजित हुई, जिसमें 60 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी और हर वार्ड में चुनाव के कामों को गति देने सभी महिला सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस बैठक में गुजरात प्रदेश महिला अध्यक्ष गायत्री बाबागेला ने बताया कि बेहद दुख की बात है कि बीजेपी के राज में व्यापारी, छात्र, किसान और महिला वर्ग काफी परेशान है, जिसके बारे में हमारे विपक्ष की अपील को भी सत्ता पक्ष नजरअंदाज कर रहा है। આજે અમારી મહિલા કોંગ્રેસની સંગઠનની અને સાથે સાથે આવનારી ઇલેક્શન મહાનગરપાલિકા, તાલુકા અને જિલ્લાના જે ઇલેક્શન આવી રહ્યા છે એના અંતર્ગત મહિલા કોંગ્રેસની મીટિંગ છે અને અમારા સંગઠન કે જે સંગઠન તો આખું માળખું છે એ રચાઈ ગયું છે, પણ એ સંગઠનના અમારા બહેનો જે છે એને તમામને જવાબદારી જુદી જુદી સોંપી અને જે લોકો ઇલેક્શન લડવા માગે છે એ બહેનોના પણ અમે અત્યારે ફોર્મને એ ભરાવ્યા છે કે જે મહિલાઓ, કેમ કે 50% જ્યારે મહિલા અનામત છે ત્યારે મહિલા કોંગ્રેસમાંથી પણ જે બહેનો સક્ષમ છે એને પાર્ટી તરફથી અમે રજૂઆત કરવાના છીએ કે જે મહિલા કોંગ્રેસની બહેનો સક્ષમ છે એને તે ટિકિટ આપે। મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા હર હંમેશ જે પણ હશે મોંઘવારીના પણ આંદોલન થઈ જ ગયા છે। અહીંયા કોર્પોરેશનમાં અહીંયા પણ થાય તો કે દરેક તાલુકા, જિલ્લા મથકે મોંઘવારીનો, પછી ગેસના સિલિન્ડરનો ભાવ વધારો હોય કે પછી અત્યારે જ તમે જોશો કે શાકભાજી એમાં પણ જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગની જે કસ્તુરી ગણાતી ડુંગળી અને બટેટાના ભાવ જોશો તો તે આસમાને ગયા છે। અત્યારે કઠોળ હોય કે ગમે તે ભાવ, ત્યારે એ દરેક તબક્કે મહિલા કોંગ્રેસ છે એ હર હંમેશ લોકોની સાથે જ રહ્યું છે અને કાર્યક્રમ પણ આપેલા છે। પણ આ બહેરી, મૂંગી અને આંધળી સરકારને એક સક્ષમ વિપક્ષ તરીકે અમે જે પણ રજૂઆત કરી છે એ જોવા કે સાંભળવાનો એને સમય જ નથી। आज एमएसयू हेड ऑफिस पर छात्रों ने मास प्रमोशन की मांग के साथ हंगामा किया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। कल एमएस यूनिवर्सिटी के टीवाई बीकॉम के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा होनी थी, मगर लॉगिन की समस्या के चलते कई छात्र परीक्षा समय पर नहीं दे पाए। इससे परेशान होकर विश्वविद्यालय के छात्र एग्जाम में मास प्रमोशन देने की मांग के साथ एमएस यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस पर हंगामा करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये दूसरा दिन है जब छात्रों ने हंगामा मचाया है। छात्र हेड ऑफिस के मुख्य मार्ग के पास रास्ता रोककर बैठ गए हैं और इन छात्रों का कहना है कि जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक हम मार्ग को रोककर यूं ही बैठे रहेंगे। आज एजीएस ग्रुप में उग्र आंदोलन करवानो मात्र ने मात्र एक ज कारण है कि यूनिवर्सिटी ने सत्ताधीशों पानी हलतुं नथी। काले यूनिवर्सिटी टीवाई बीकॉम मिड सेम ऑनलाइन एक्जाम में 15% जेटला विद्यार्थीओ जॉइन थी शक्या नथी। आज ए रेशियो वधीने
30% પર પહોંચ્યો છે. તો એજીએસસી ગ્રુપની એ જ માંગ છે કે વિદ્યાર્થીઓને આજના પેપરમાં અને કાલા પેપરમાં માર્ક્સ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે, કાં તો અને એક પ્રોપર ગાઈડલાઇન્સ બહાર પાડવામાં આવે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને રાહત મળી રહે. અને સાથે સાથે એ પણ રજૂઆત છે કે યુનિવર્સિટી સાથે વિદ્યાર્થીઓ સૂર અને તાળ મનાવે છે, પરંતુ યુનિવર્સિટીની પીપોળી હર હંમેશની જેમ બંધ થઈ જાય છે. તો એક જ માંગ છે કે વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય મળે અને આ 2 પેપર ફરીથી લેવામાં આવે. वहीं एजीएसजी के प्रदीप रबारी और हर्षिल रबारी ने रजिस्ट्रार को घेर लिया और विजिलेंस कार्यालय ले गए. 2000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે જે પોતાની એક્ઝામ આપી નથી રહ્યા. ટીવાય બીકોમની ઓનલાઈનની એક્ઝામ છે. રેશિયો ખૂબ મોટો છે, 6000 કે 7000ની જેટલો રેશિયો છે. પણ એમાં અમુક વિદ્યાર્થીઓ એટલા બધા ગંભીર રીતે પોતાની એક્ઝામ જ નથી આપી રહ્યા કારણ કે તેમનો આઈડી પાસવર્ડ રોંગ બતાવે છે, ઇનકોમેડો મોડ ઓન નથી. ઘણા બધા ઇસ્યુઝ બતાવી રહ્યા છે. સાઇટ ટેમ્પરરી અનઅવેલેબલ બતાવે છે. પહેલેથી જ પ્રિપેર કરવામાં આવ્યા હતા એમએસયુના સત્તાધીશોને કે આપણી એમએસયુનું જે પોર્ટલ છે તેને સતત બનાવો જેથી વિદ્યાર્થીઓને એક્ઝામ ટાઈમ પર એમનો માનસિક ત્રાસ દૂર થાય. આજે એ જ ત્રાસ આવીને ઊભો રહ્યો છે અને વીસી સરને રજૂઆત કરી છે. વીસી સર અંદર જતા રહ્યા છે. હવે આગળની ગાઈડલાઇન બહાર નહીં પાડવામાં આવે, આજનું પેપર જો કદાચ રદ નહીં કરવામાં આવે તો એજીએસજી ગ્રુપ દ્વારા ઉગ્રથી ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. ભૂખ હડતાલ ચાલુ છે. અને બીજી વસ્તુ એ કે આજના પેપરમાં છે તે માસ પ્રમોશન આપવામાં આવે કાં તો એ પેપરની કોઈ ને કોઈ નવી ગાઈડલાઇન બહાર પાડવામાં આવે. મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની કોમર્સ ફેકલ્ટીની ઇન્ટરનલ એક્ઝામ ચાલી રહી છે. ઇન્ટરનલ એક્ઝામની અંદર પેચી ઇન્ટરનેટ કનેક્શન હોવાના કારણે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો લોગિન નથી થઈ શકતા. લોગિન થાય તો એમાંથી લોગ આઉટ થઈ જાય છે. આ નેશનલ લેવલ અથવા તો સ્ટેટ લેવલ ઉપર અથવા તો રિજનલ અથવા લોકલ લેવલ ઉપર ઇન્ટરનેટ પેચી હોવાના કારણે કનેક્ટિવિટી નથી આવતી, એનો ઇસ્યુ છે. સર્વરનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પોર્ટલનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી અથવા એક્ઝામિનેશન સોફ્ટવેરનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી લગભગ 3-4 કલાકની અંદર ફરી વખત જોડાઈ જાય અથવા જોઈન થઈ જાય એટલે આ પ્રોબ્લેમનું નિવારણ આવી જાય. પણ હાલ પૂરતું વિદ્યાર્થીઓ માટે જે વિદ્યાર્થીઓને તકલીફ પડી છે તે તમામ એક્ઝામિનેશન ફરી वक्त लेवा माटे थई अने यूनिवर्सिटी तत्पर है। कल टीवाई बीकॉम के कुछ छात्रों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी नहीं दिया गया था, जिसके चलते विद्यार्थियों ने परीक्षा को रिशेड्यूल और परीक्षा का समय बढ़ाने की मांग की है। અત્યારે જે ટીવાય બીકોમની જે ઇન્ટરનલ એક્ઝામ ચાલી રહી છે, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ લગભગ 6000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝામ આપી રહ્યા છે, પરંતુ જ્યારે એક્ઝામમાં એપિયર થાય છે 4 થી 5 એમસીક્યુ એટેન્ડ કરી શકે છે, ત્યાંથી ઇનવેલિડ બતાવી દે છે, ઇનઅવેલેબલ બતાવી લે છે, તેને કારણે વિદ્યાર્થીઓનો માનસિક તણાવ વધી રહ્યો છે। કાલે પણ આવું હતું, આજે પણ આવું થયું છે। ટાઈમિંગ વધારવા છતાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રોપર મળતું નથી, આખી એક્ઝામ નથી આપી શકતા, તેને કારણે ઘણા બધા અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ તમે જોઈ શકો છો, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાર્થી પરિષદ સાથે ઉપસ્થિત છે। આ વિદ્યાર્થી પરિષદ એ વિદ્યાર્થીઓના હિત માટે આપતું આવ્યું છે અને આપશે હજુ પણ, અને આ જે વિદ્યાર્થીઓ માટેની જે તકલીફ પડી રહી છે, આ એક્ઝામ છે, એક્ઝામ રીશેડ્યુલ કરવામાં આવે તાત્કાલિક, આની પર સર્વર જે ડાઉન થઈ રહ્યું છે, જે કંઈ પ્રોબ્લેમ છે, ટેકનિકલ જે કંઈ ખામી આવી રહી છે તેની કારણે વિદ્યાર્થીઓને તકલીફ પડી રહી છે, તણાવ વધી રહ્યો છે, તો આ વસ્તુ ના થાય તેની માટે વિદ્યાર્થી પરિષદ વિરોધ કરી રહ્યું છે અને તાત્કાલિક આની પર રીશેડ્યુલ એક્ઝામ કરવામાં આવે અને જેમને જે 40 મિનિટનો જે સમય આપવામાં આવે છે એ સમય પણ વધારી દેવામાં આવે, કારણ કે 10 થી 15 મિનિટ તો એ લોકોને રજીસ્ટર કરવા માટે થતો હોય છે, તેને કારણે જેમની જે ડિપ્રેશન છે, ડિપ્રેશનમાં વિદ્યાર્થીઓ આવી જતા હોય છે, તો એની માટે આજે વિદ્યાર્થી પરિષદ રજૂઆત કરવા આવી। वहीं शिनोर तालुका के कुछ छात्रों ने भी परीक्षा में आ रही परेशानियों की शिकायत की। અમે એમએસ યુનિવર્સિટીમાં ભણીએ છીએ, ત્યાંના સ્ટુડન્ટ છે, સિનોર તાલુકામાં રહીએ છીએ, તો અમે 2 દિવસથી પેપર આપી રહ્યા છે, તો એના માટે અમારે લોગિન જ નહીં થતું, તો અમારે એક્ઝામ કેવી રીતે આપવાની? 2 દિવસથી અમે સળંગ ટ્રાય કરીએ છીએ તો પણ નહીં થતું, લાસ્ટ યર છે, તો ફ્યુચરનો સવાલ છે, માટે અમે एग्जाम જ કેવી રીતે આપીએ? वडोदरा शहर पुलिस के क्षेत्र में आते 3 पुलिस केंद्रों द्वारा 3 साल में बरामद लाखों रुपए की शराब का आज नाश किया गया। वडोदरा शहर के चिकोदरा के बाहर वडोदरा शहर पुलिस के जोन 4 में आए सिटी, बापोद और वारसिया पुलिस केंद्रों द्वारा पिछले 3 सालों यानी वर्ष 2017 से 2020 के दौरान बरामद की गई करीब 75 लाख के मूल्य की देशी विदेशी शराब का नाश किया गया। यह कार्यवाही क्रमशः सिटी, वारसिया और बापोद पुलिस केंद्र द्वारा की गई। इस मौके पर उच्च पुलिस अधिकारी और प्रोहिबिशन अधिकारी खास तौर पर मौजूद थे। इससे पहले पानीगेट, वाड़ी, मकरपुरा और मांजलपुर पुलिस द्वारा ऐसी ही कार्यवाही की गई थी। आज रोज वडोदरा शहर बापोद, वारसिया और सिटी पुलिस स्टेशन वर्ष 2017 थी लई आज दिन सुधी कुल 77 लाख थी उपरनी किंमतनो मुद्दामाल તેમજ 30,000 થી વધુની સંખ્યામાં વિવિધ બોટલોનો મુદ્દામાલનો નાશ કરવામાં આવી રહેલ છે। કમિટીના સભ્ય તરીકે એસીપીસી જી ડિવિઝન, એસડીએમ શ્રી, નશાબંધી તેમજ એક્સાઇઝ અધિકારીની હાજરીમાં તમામ કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓ અનુસરી મુદ્દામાલનો નાશ હાથ ધરવામાં આવેલ છે।
भरूच के शिल्पे स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में चल रहे ट्यूशन क्लासेस पर पुलिस ने छापेमारी की है। कोरोना के चलते राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन क्लासेस बंद रखे गए हैं। इसके बावजूद भरूच के शिल्पे स्क्वायर शॉपिंग सेंटर के एक निजी ट्यूशन क्लास में पुलिस ने छापा मारा, जहां पर एक ही कमरे में 50 से अधिक छात्र पढ़ाई करते हुए पाए गए। इस मामले पुलिस ने ट्यूशन क्लास के एडमिन को गिरफ्तार कर लिया है। गांव और शहर में बस्ती में रहते और बीपीएल कार्ड धारकों को बिजली के कनेक्शन मुफ्त में देने की गई अपील के तहत बिजली के कनेक्शन देने की कार्यवाही शुरू की गई है। पादरा के विधायक और सरपंच द्वारा झोपड़पट्टी योजना अंतर्गत गांव और शहरी इलाकों में बस्ती में रहने वाले लोगों को सहायक होने, उनको मुफ्त में बिजली कनेक्शन मिले, इस हेतु गोत्री एमजीवीसीएल में अपील की गई थी। धारासभ्यश्रीने रजूआत करी थी। एमने एमजीवीसीएल में रजूआत करीने झूंपड़पट्टी योजना अंतर्गत जे लोकोने वीजळीना कनेक्शन नथी ए लोकोने वीजળી मળી रहे, जे लोको पोताना एस्टिमेट भरी सके एवा नथी, पैसा खर्ची शके नथी, ए बधाने कनेक्शननो लाभ मળી सके ए माटे अमे रजूआत करी थी ने आजे अमारे रजूआत सांभळीने एमजीवीसी मांथी साहेबो आवे छे। पादरा विधायक ने इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ लेने अपील की थी। एमजीवीसीएल द्वारा दरेकने वीजળી कनेक्शन મળે એવા એ લોકોના સતત પ્રયત્નો રહેતા હોય છે। આજે અહીંયા તમામની રજૂઆતના પગલે અને આપણા સાહેબશ્રી જે અહીંયા આવ્યા છે ડિવિઝનમાંથી ચંદેલ સાહેબ, એ તમામ અને સરપંચો અહીંયા જે પણ ઉપસ્થિત છે એ તમામ લોકોને પ્રયત્ન સતત રહ્યા છે કે બધાને વીજળી કનેક્શનો મળે। એ અંતર્ગત ઝૂંપડપટ્ટી યોજના જે છે વીજળીકરણ કરવાની, એ અંતર્ગત બધાને માહિતી આપવામાં આવી છે અને અહીંયાથી તમામ સરપંચોને પણ જાણ કરવામાં આવશે કે તમારા ગામમાં જે લોકો વંચિતો છે, વીજળીથી વંચિત છે, કે જે બીપીએલ યાદી હેઠળ આવે છે, એ તમામ લોકોને વિના એમને કોઈ પણ જાતનો ચાર્જ ભરવાનો નથી અને એમને મીટર મળશે। वहीं गोत्री एमजीवीसीएल के इंजीनियर सुपरिटेंडेंट ने बताया कि नियमों के आधार पर ग्रामीण और शहरी विस्तार के लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेडनी एक झूंपड़पट्टी योजना स्कीम है, जेडपी स्कीम। ए स्कीमनी अंदर आपणा एरियानी अंदर जे भी लोको वीजळीथी वंचित रही गयेला छे, जे लोको बीपीएल कार्ड होल्डर छे, गरीबी रेखाने नीचे जेनी इनकम जे छे रूरल एरिया में 1,20,000 अंदर छे अने अर्बन एरिया में 1,50,000 अंदर छे, तेओने वीज कनेक्शन मफत में आपवानी जोगवाई छे आपणी पासे। परंतु मैं जे बरोड़ा सर्कल में जॉइन थया पछी मने जाणवा मळ्युं छे के आ लोकोने अवेरनेस नथी ने आपना मीडिया थ्रू आपना माध्यम थकी मारी आपने पण विनती छे के आ वधारे वधारे प्रचार करे, वधारे बधा लोको जे वीजळीथी वंचित रही गयेला छे तेओ अत्यारे आ स्कीमनो लाभ ले। एमां अरजदार जे छे ए तेओने सरपंचने लिस्ट, सरपंचश्री लिस्ट बनाशे गामनी जे वीजળી कनेक्शनथी वंचित रही गयेला छे અને એ લિસ્ટ બનાવીને ટીડીઓને મોકલશે ને ટીડીઓશ્રી સર્ટિફાઈ કરીને એ લિસ્ટ રેકમેન્ડેશન જે તે એરિયાની સબ ડિવિઝન ઓફિસમાં મોકલશે। અમારા અધિકારી ત્યાં જઈને સર્વે કરશે અને એમના જરૂરી માલિકાના હકના એક ડોક્યુમેન્ટ તેમજ એના આઈડી પ્રૂફ અને ફોટોગ્રાફ અને બોર્ડનું A1 ફોર્મ, એમજીવીએસનું A1 ફોર્મ છે ભરીને લેવા આવશે અને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આ સદર કનેક્શન આપવામાં આવશે। गोत्री अस्पताल के डॉक्टरों की आज तीसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी रही। बैनर्स, पोस्टर्स व सूत्रोच्चार के साथ गोत्री अस्पताल के डॉक्टर्स आज तीसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। उनकी मांगों को अभी भी स्वीकारा नहीं गया है, इस कारण वे भारी संख्या में एकत्रित हुए। અમારી માંગો 3 છે એ એવીની એવી જ રહેશે અને જો અગર સરકાર એમનો નિયમ નહીં બદલે તો અમારી આ સ્ટ્રાઇક ચાલુ રહેશે અને જો આગળ પણ આવું જ રહ્યું અને સરકાર એમનો નિયમ નહીં બદલે તો આગળ જઈને જેડીએ અને યુજી સ્ટુડન્ટ્સ પણ અમને જોડાશે અને અમને સપોર્ટ કરશે આ સ્ટ્રાઇકમાં। ત્યાં સુધી સરકાર એમનો નિયમ નહીં બદલે ત્યાં સુધી અમારી સ્ટ્રાઇક કન્ટિન્યુ જ રહેશે। એટલે સરકાર અગર એમનો અમને સપોર્ટ કરવામાં નિયમ આપશે તો અમે એ દિવસથી ડ્યુટી પર જોઈન થઈ જઈશું। સરકારશ્રીએ જે નિવેદન આપ્યું હતું 2 દિવસ પહેલાં, બરાબર, એ અમારા ઇન્ટર્ન ડૉક્ટરોના પક્ષમાં કોઈ પણ રીતે હકારાત્મક નિર્ણય આવેલો નથી। જો સરકારશ્રી પૂરેપૂરી રીતે ચર્ચા વિચારણા કરીને કોઈ હકારાત્મક નિર્ણય લાવશે તો અમે તરત જ બીજી જ સેકન્ડથી તમામ ઇન્ટર્ન ડૉક્ટરો સરકારી મેડિકલ કોલેજ તેમજ GMRS મેડિકલ કોલેજના તમામ 2200થી 2500 જેટલા ઇન્ટર્ન ડૉક્ટરો તરત બીજી જ સેકન્ડથી અમે ડ્યુટી પર જોડાવા માટે તત્પર છીએ। તો અમારે સરકારશ્રીને એટલી જ નમ્ર વિનંતી છે અને અપીલ છે કે પૂરેપૂરી રીતે ચર્ચા વિચારણા કરીને અમારા પક્ષમાં હકારાત્મક નિર્ણય લાવે। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए
VNM न्यूज। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। बढ़ते जा रहे प्रदूषण और केमिकल से उगाई सब्जियां और फल खाने से भी हो रहा है सेहत को नुकसान। ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प है किचन गार्डन का। अपने घर की बालकनी, गार्डन, टेरेस पर किचन गार्डन बनाएं, सब्जियां और फल खुद ही उगाएं। अब किचन गार्डन बनाना बहुत है आसान। गार्डन शॉपी के साथ सुभानपुरा बालाजी नगर के गार्डन शॉपी में अवेलेबल है ट्रॉपिकल प्लांट्स, एशियन वेजिटेबल सीड्स, ऑर्नामेंटल और सीजनल प्लांट्स, हर्ब्स और बहुत कुछ। गार्डन शॉपी द्वारा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, ग्रीन हाउस मैनेजमेंट, वर्टिकल गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग पर दी जाती है एक्सपर्ट एडवाइस भी। तो विजिट करें गार्डन शॉपी, L111 बालाजी नगर नियर समता फ्लैट, सुभानपुरा, वडोदरा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। वडोदरा में आज बुधवार को कोरोना के 105 नए मामले दर्ज हुए, जिन्हें मिलाकर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,781 हो गई है। वडोदरा शहर में आज बुधवार को वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में 105 नए कोरोना केस पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। नए 105 कोरोना केस के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,781 पर पहुंच गया है। 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,844 सैंपल लिए गए, जिसमें से 3,739 सैंपल नेगेटिव आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक 231 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 1,337 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है, जिसमें से 1,129 मरीज स्टेबल हैं, 156 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, जबकि 52 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आज 105 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 18,213 हो गई है। आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। 1971 में इसी दिन एक बड़ी पाकिस्तानी सेना जो भारत को हराने के लिए पहुंची थी, उसे हमारे मुट्ठी भर सैनिकों ने कुचल दिया था। 1971 के इस युद्ध में पाकिस्तान को भारत से करारी हार का सामना करना पड़ा था। फिर पूर्वी पाकिस्तान को भी स्वतंत्रता मिली, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और हमारा पड़ोसी देश भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग में जीत के आज 49 साल पूरे हो गए। 50वां साल आज शुरू हुआ। युद्ध के बाद पाकिस्तान की सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी को अपने लगभग 93,000 सैनिकों सहित भारतीय सेना को समर्पण करना पड़ा था। ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के मन में प्रेरणा देने वाला साबित हुआ था। इस विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल NWM पर स्वर्णिम विजय मशाल जलाई और उनकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी मौजूद रहे। सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही बैंड डिस्प्ले, सेमिनार, प्रदर्शनी, फिल्म फेस्टिवल, कॉन्क्लेव और एडवेंचर एक्टिविटी भी की गई। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का मुख्य कारण बांग्लादेश को आज़ादी दिलाना था। इस जंग में भारतीय सेना भी शामिल हुई थी। 13 दिन चली इस लड़ाई में पाक की सेना को मुंह की खानी पड़ी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी जनरल A.K. नियाजी ने अपने सैनिकों के साथ भारत और मुक्ति वाहिनी के सामने ढाका में आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। शहर के विविध विस्तार में दूषित पानी मामले VMC की जांच रिपोर्ट आने के बाद अब VMC ने GPCB से जांच की मांग की है।
कारेलीबाग विस्तार की पानी की टंकी समेत विविध टंकियों से दूषित पानी के वितरण की समस्या आने पर एडिशनल सिटी इंजीनियर और जल आपूर्ति कार्यपालक इंजीनियर समेत अधिकारियों की टीम ने महिसागर पहुंचकर रायका दौड़का के पानी के सैंपल्स और नदी के पानी के सैंपल्स लिए और पानी की टंकियों से भी सैंपल लेकर इन्हें लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया गया, जिसमें वीएमसी द्वारा लेबोरेटरी में भेजे गए पानी के रिपोर्ट में ये पानी खराब होने की रिपोर्ट आने पर पालिका अधिकारियों ने जीपीसीबी को इस मामले जानकारी देकर कार्यवाही की मांग की है। મહીસાગર નદીમાં પીળું પાણી આવવાની જે સમસ્યા થઈ હતી તેના રૂટમાં જોતાં અંદર નદીમાં જ પીળું આવતું હતું અને બીજી રીતે તપાસ કરતાં કેમિકલવાળું પાણી પણ આવવાની શક્યતા જણાયેલી, જેના સેમ્પલ લેવામાં આવેલા રો વોટરમાં યલો કલર હોવાના કારણે તેમજ ટર્બિડિટી વધારે હોવાના કારણે અત્રેની લેબોરેટરીમાં ચેક કરાવતા એ અનફિટ રો વોટર આવેલ છે. પરંતુ જે આપણે અહીંયા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવામાં આવે છે, ફ્રેન્ચવેલમાંથી આવે છે, વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાંથી આવે છે, એની ટર્બિડિટી અને યલો કલર દૂર થયેલ છે, જે ફિટ પાણી સેમ્પલ જણાય છે. જે બે ફેક્ટરી છે તેમાંથી તેઓનું રો વોટર અથવા તે એફ્લુએન્ટ ના છોડે તેના માટે આપણે અત્રેથી નોટિસ આપી છે અને તે અંગે જીપીસીબીને જાણ કરેલ છે, કલેક્ટરશ્રીને પણ જાણ કરેલ છે, જેથી તેઓ સક્ષમ તેઓના જે નિયમો છે તે પ્રમાણે કાર્યવાહી હાથ ધરશે. गोत्री ईएसआई अस्पताल के पास उषानगर सोसाइटी में वीएमसी द्वारा अवैध निर्माण आज तोड़े गए। गोत्री की उषानगर सोसाइटी में मकान मालिकों द्वारा अवैध निर्माण किए गए थे, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियां हो रही थी। ऐसी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कंपाउंड वॉल और कई प्रकार के अवैध निर्माण को आज वीएमसी ने तोड़ गिराया। वडोदरा म्युनिसिपल कोर्पोरेशनના પશ્ચિમ ઝોનમાં સમાવિષ્ટ વહીવટી બોર્ડ નંબર 11ના વિસ્તારમાં આવેલ ઉષાનગર સોસાયટી ટીપી 14માં ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવા માટેનો પ્રોગ્રામ જમીન મિલકત ટીપી દ્વારા બનાવવામાં આવેલો અને આ ઉષાનગરના 14 યુનિટના કમ્પાઉન્ડ વોલ, ઓટલા, ફેન્સિંગ, गेट वगैरह दबाणों आज रोज दबाण शाखा की टीम, गोत्री पोलीस स्टेशन स्टाफ और दबाण शाखा तेमज फायर ब्रिगेड और जीबी ने साथे राखीने चालू करेल छे अने लगभग अर्धी कामगीरी पतवा आई है और कोई जातनो विवाद नहीं, शांति कामगीरी चाले छे। कोरोना काल दरमियान सफाई कर्मचारियों की अहम भूमिका रही थी, मगर वीएमसी में नए कॉन्ट्रैक्टर के आ जाने से करीबन 500 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। आज दूसरे दिन भी कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। न केवल कोरोना काल में मगर आम दिनों में भी सफाई कर्मचारी डोर टू डोर गाड़ी के द्वारा सभी के घरों से कचरा इकट्ठा करते हैं और शहर को साफ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, मगर अब इन्हीं कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। वीएमसी में नए कॉन्ट्रैक्टर के आ जाने से करीब 500 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। ये दूसरा दिन है जब लगातार इन कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज कलाली निकट डंपिंग यार्ड में सफाई कर्मचारी इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द नौकरी वापस करने की वीएमसी से मांग कर रहे हैं। डोर टू डोर गाड़ियाँ चलाता था तो आ लोगों अमने काढ़ी दीधा, बीजो कॉन्ट्राक्टर आई गयो एने नवा माणस बीजा लाइन मूक्या અને અમને છૂટા પાડી દીધા। એ અમે લોકો કરુણાના કામ પર અમે લોકો કામ કરેલું છે। અમે લોકોએ કરુણા કામ પર બી અમે ઘર ઘરથી કચરો ઉપાડેલો છે। આજે 10 થી 15 વર્ષ અમે નોકરી કરી છે, એટલા માણસોને નોકરી પરથી છૂટા કરવામાં આવ્યા છે। અમને નોકરી નવા માણસો એ લોકો લાવ્યા છે નવા કોન્ટ્રાક્ટમાં। અમને જૂના માણસોને પૂછ્યું પણ નથી કે તમારે નોકરી કરવી છે કે નહીં, ને અમને કાઢવામાં આવ્યા છે। અમે લોકો અભી પૂરી ફેમિલી પૂરી પબ્લિક લઈને અમે ક્યાં જઈએ? તો અભી અમે લોકો બેરોજગાર થઈ ગયા છે। અભી અમારા લોકોને જવાનું ક્યાં? આના માટે કોઈ જગ્યા રજૂઆત કરેલી તમે? નથી કરેલી, પણ અમારું કોઈ હજુ નિકાલ આવ્યો નથી। અમે લોકો બધા 2-4 દિવસથી બેસી ગયા, નવા કોન્ટ્રાક્ટમાં આવ્યા ગાડી, અમારું કોઈ કથી વાત નહીં, કોઈ સાંભળતું જ નથી। અમારું કોઈ બાજુ ચાલવા જેવું અમારા આગળ અધિકારી કોઈ બોલવાવાળા પણ નથી। અમે લોકો એકલા પડી ગયા છે ને બિલકુલ અમારા આગળ કોઈ પૂછવા તક નથી આવતું કે તમારે કોઈ નોકરી કરવી છે કે બીજું કંઈ કરવું છે કે નહીં। ને અમે લોકો એવી હાલતમાં આવ્યા છે, કરુણાના टाइम पर भी અમે કામ કરેલું છે। અભી અમારા બાયડી છોકરા અમે લઈ લઈને નાના છોકરા લઈ લઈને નોકરી કરી છે। આજે અમને લોકોને એકદમથી ઉતારવામાં આવ્યા છે। અમે લોકડાઉનમાં બી હવે અમે શું કરીએ? હવે એવું વિચાર થાય છે કે અમે લોકો આત્મહત્યા કરી લઈએ કે કંઈ બી કરી લઈએ। અમે ઊંધું અમને લોકો નોકરી નહીં મળે તો અમે આગળ કરીશું શું? અમે આના સિવાય કોઈ નોકરી આજે કરી નથી ને અમને આ નોકરી ફાવે છે તો અમે આ નોકરી કરીએ, પણ અમને પૂછવાનું તમને એક ફરજ બને છે કે નહીં?
પણ અમને પૂછ્યું તક નથી. હવે આગળ પડતા અમે કરી શું શકીએ? नगर प्राथमिक शिक्षा समिति संचालित रावपुरा शाला नंबर 1 में देश के महानुभावों के चित्रों का ख्याल नहीं रखा जाने से महाराष्ट्रीयन युवा संगठन ने डिप्टी कमिश्नर को शिकायत की है। यूं तो नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित रावपुरा की यह शाला नंबर 1 कई सालों से बंद है, मगर यहां बच्चों को देश की महान शख्सियतों से अवगत कराने के लिए बनाए गए चित्रों पर कील लगाकर कपड़े सुखाए जाते हैं और यही हालत देखकर महाराष्ट्रीयन युवा संगठन ने आज डिप्टी कमिश्नर सुधीर पटेल को शिकायत की। आज रजूआत करवा माटे अमे आया छे। भाई रजूआत छे अपना महापुरुषों विषे। अपना जे महापुरुषों थई गया छे एमनुं अपमान थई रह्युं छे अपना वडोदरानी कोर्पोरेशननी ऑफिसमां। वडोदरानी रावपुरा पासे स्कूल आवेली छे। ए पहेला स्कूल हती अने हवे कोर्पोरेशननी ऑफिस थई छे। त्यां नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज अने श्री स्वामी विवेकानंदजीनुं पेंटिंग छे। ત્યાં એમનું અપમાન કરવામાં આવે છે। એમના ઉપર પેઇન્ટિંગ છે, એમના ઉપર કપડાં સૂકવવામાં આવે છે, નીચે ગંદકી છે, મૂતરડી છે। હવે એ કોનું કામ છે આ બધું જોવાનું? હમણાં અમને કોર્પોરેશનના કમિશનર સાહેબને મળ્યા હતા। ઓકે, શું કીધું સાંત્વના શું આપ્યું? સાહેબે અમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે આજના દિવસમાં થઈ જશે। पादरा के विधायक जसपाल सिंह पढ़ियार ने विभिन्न मांगों के साथ सरकार को पत्र लिखा है। पादरा के डबका गांव के महिसागर नदी पर स्थित गायकवाड़ी शासन दौरान बनाई गई पाल जर्जरित हो गई है। उसका नवनिर्माण व मुजपुर गांव की नदी किनारे पाल बनाना व साथ ही पादरा में स्थित तुलजा भवानी मंदिर और महुआ के रणछोड़ जी मंदिर के पास स्थित तालाबों के ब्यूटिफिकेशन व महीकाठी विस्तार को जोड़ता पादरा के महुवड़ से डबका के रोड को चौड़ा करने की मांग करता हुआ पत्र पादरा के विधायक जसपाल सिंह पढ़ियार ने सरकार को लिखा है। तो लोगोने जे श्रद्धाळुओ अहींया आवे छे, यात्राळुओ जो अहींया दर्शनार्थे आवे छे तेओ आ रमणीय स्थळनो सारो एवो लाभ लई शके एम छे। એટલા માટે એ બાબતની પણ એક રજૂઆત કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે માર્ગ અને મકાન વિભાગની અંદર પણ દર વર્ષે જે પહોળા રસ્તા કરવામાં આવે છે એ એક મર્યાદા એમની 7 થી 10 કિલોમીટરની જે હોય છે એ પ્રમાણેની મેં માગણી કરી છે કે અત્યારે હાલમાં પ્રથમ તબક્કા ગયા વર્ષે પણ જે ચોકારી સુધીનો રસ્તો બન્યો છે એવી રીતે આ વખતે મોવરથી ડબકા સુધીનો એક રસ્તો બનાવવા એ રીતની માગણી કરી છે। સાથે તાલુકામાં જે 7 વર્ષથી વધુના રસ્તા થઈ ગયા છે તેમને રીસર્ફેસિંગ કરવામાં આવે તે રીતની પણ માગણી સરકાર પાસે મૂકી છે। वडोदरा के पास आए जगतपुरा गांव का एक 13 वर्षीय लड़का बुटलेगर उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मविलोपन करने के लिए वडोदरा जिलाधीश कार्यालय पहुंचा। जगतपुरा गांव का एक महज 13 वर्षीय लड़का नरेश गोहिल बुटलेगर उत्पीड़न के कारण आत्मविलोपन के इरादे से आज जिला कलेक्टर कार्यालय आया, जहां ड्यूटी पर मौजूद होमगार्ड ने केरोसिन का डब्बा उससे छीन लिया और उसे बचा लिया गया। हालांकि मौके पर पहुंची रावपुरा पुलिस ने नरेश गोहिल सहित उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया है। आत्मविलोपन કેમ કયા કારણસર? બુટલેગરો ગામમાં નહીં ઘૂસવા દેતા એ કારણસર। કયા ગામમાં કયા અને કોણ છે બુટલેગર? ગ્રામપુરા જગતપુરા મહેશ અને ઉપેન્દ્ર। તો કઈ ઘટના બની તો તેના કારણે તમને આવું કર્યું? મોબાઈલના કારણે 3 વર્ષ પહેલાં એણે દારૂ વેચવા માટે માણસ રાખ્યો તો મને એને કીધું કે તું એના ઘરેથી મોબાઈલ આપી દે તો મેં ઘરે પૈયો ના હોવાને કારણે પત્નીને આપ્યો તો કે મારી પત્ની મોબાઈલ કેમ આપો એમ કરીને મને 3 વર્ષ પહેલાં મારીને મારા મામાના ઘરે મેં ગતો રહ્યો। અત્યારે તમને ગામમાં જવા દે? નહીં જવા દેતા નહીં। અત્યારે મારા દાદા કેન્સલ પર હતા મેં જોવા ગયેલો ત્યાં મને રામપુર ચક્કુ લઈને મારવા આવી ગયેલો પોલીસ પણ મારું કંઈ ઉખાડ લઈને એમ બધું કયા કરે છે। અમને કંઈ ઘરનો પ્રોબ્લેમ હતો અને ભાઈ 2 દિવસથી આવું કરતા હતા। ગઈકાલે મને મેસેજ મળ્યો કે હું આવવાના છે છોકરો। હવે છોકરાને કંઈ પ્રોબ્લેમ એનો ઘરનો છે એ આત્મવિલોપન કરવા માટે અહીંયા આવ્યો હતો અને હું એ બચાવ્યો ને એ કેરોસીનનો ડબ્બો લઈને આવ્યો હતો। કેરોસીનનું ઢાંકણું એને ખોલ્યું, એ કેરોસીનનું ढक्कन बंद कराया ने केरोसिन डब्बो लेने मेल मुकी दीधो छे अंदर। हरिनगर ब्रिज के नीचे कई दिनों से गड्ढा खुदा हुआ है। महानगर पालिका में बार बार शिकायत करने पर भी तंत्र मानो सो रहा है। इस बड़े गड्ढे की वजह से ट्रैफिक जैम की समस्या भी देखी जा रही है। कई बार तो इसके चलते एक्सीडेंट की घटनाएं भी हुई है। कई बार की गई शिकायतें प्रशासन के कानों से टकरा कर वापस आ जाती हैं और शिकायत को गंभीरता से न लेने के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अठवाडियाથી આવું નવું પડી રહેલું છે। આ ભૂવાના કારણે અમારે ટ્રાફિક જામ થાય છે। ઘણા બધા ખાડાને લીધે પથ્થર આવી જાય છે, એના કારણે પડી છે બધા। આ 3-4 મહિનાથી ખોદેલું છે અને ટ્રાફિકમાં એટલો નડે છે ટ્રાફિકવાળાઓને કે આ લોકો બેચારા હેરાન થઈ જાય છે પોલીસવાળા। કોઈ આમથી કાઢે કોઈ એમથી કાઢે, રોડ બી બરાબર રહેતો નથી। चांदोद पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल का ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार देखा गया।
चांदोद के गुमानपुरा गांव के ग्रामीणों के साथ पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से लोगों में रोष था। चांदोद के गुमानपुरा गांव के लोगों ने रेती माफियाओं से तंग आकर उनके खिलाफ कार्रवाई न कर ढिलाई करती पुलिस के विरोध में रैली निकाली और पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की। અને બધું તૂટે છે, ખેતર પણ તૂટી જાય છે આટલું બધું. પોલીસવાળા એવું કહે છે કે તેમનો વોક છે અને અમારો મોબાઈલ પણ લઈ લે છે અને સામેવાળાનો મોબાઈલ નહીં લઈ શકતા એ લોકો. આવું કેમ? એ પૈસા ખવડાવે છે એટલે પોલીસ કેમ પૈસા ખાય છે? એમને એવું નથી કામ કે બધાને એક જ જેવું કરવું? મંદિરના કામ માટે કેમ નાખ્યા છે? તો પછી ગેરકાયદેસર ભરે છે. અને હવે પોલીસવાળા કઈ છે? એમને બોલાય તો આવતા નથી. અમે ચાણોદ પોલીસ સ્ટેશન આવીએ છીએ અને અહીંયા છે નથી, તો એમને બોલાવો ને અહીંયા. અને કોઈ પોલીસવાળા અહીંયા છે નથી અને અમારું કોઈ કરતા નથી. અને ચનવાડવાળાને અને અંદર પોલીસ સ્ટેશનમાં છે ને અમે બહાર ઊભા છે, તો અમને કેમ? અમને અંદર જવા દો ને, એ લોકોને નહીં તો બહાર કાઢો. અને કેટલા વર્ષોથી રસ્તો છે, પહેલાંનો રસ્તો છાયો, એકદમ જૂનો રસ્તો છે આ લીઝવાળાએ, અને હજુ બનાવવા નાખ્યા છે. જે કરવું હોય તો કરી લો, રસ્તો નહીં બનાવું કે છે. હા, રેતી માફિયાનું આ બધું છે અને આ બધું પૈસા જ ખાય છે. ચાણોદની પોલીસ પૈસા ખાય છે खुल्लाम खुल्लू। पुलिस की इस नीति को लेकर नाराज लोगों के साथ कांस्टेबल शांतिलाल माली ने गाली गलौज की और महिलाओं के साथ अभद्र बर्ताव किया, जिस पर लोगों ने सूत्रोच्चार किए और लीज मालिक वंजारा को लेकर नाराजगी जताई। इनका आरोप है कि पुलिस इन्हीं के इशारों पर नाचती है। आइए अब डालते हैं नजर खबरें फटाफट पर। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जियों पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार किसान संगठनों और दूसरे पक्षों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि जल्द यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के स्तर पर यह सुलझने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार रोडवेज बस और टैंकर की भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद हादसे में बस सवार 8 लोगों की मृत्यु हो गई। 24 यात्री जख्मी हैं, जिसमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर धनारी थाना इलाके में हुआ। हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, जिससे ट्रैक्टर चालक ने ओवरटेक किया, तभी बस सामने आ गई। घाटे में चल रही एयर इंडिया ने सीनियर सिटीजन्स को टिकट में 50% छूट देने का ऐलान किया है। 60 साल या ज्यादा उम्र वाले लोगों को यह डिस्काउंट मिलेगा। एविएशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को इस स्कीम की जानकारी दी। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है, जैसे कि जिस दिन यात्रा करनी हो उससे कम 7 दिन पहले टिकट बुकिंग होनी जरूरी है। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर के पास से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से मंगलवार को यहां सीज फायर वायलेशन किया गया, जिसके चलते भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 सैनिकों को ढेर कर दिया। सूरत शहर में उधना पुलिस की एक महिला पीएसआई अमिता जोशी ने अपने पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ आत्महत्या का मामला दर्ज किया है। जांच में पुलिस द्वारा पति वैभव के क्रॉस रिलेशनशिप को लेकर सवालों के घेरे में ले लिया है। पुलिस ने पति की कॉल डिटेल्स हासिल करने के लिए एक कवायद भी की है। अपने पति के अफेयर के बारे में अपनी बहन से बात करने वाली अमिता की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया है। फेसबुक पर फ्रेंड बनी विदेशी लड़की की बातों में आकर पैसे कमाने के लालच में गांधीनगर के सेक्टर 26 के युवक ने 50,68,000 रुपए गंवा दिए हैं। इस मामले में सेक्टर 21 की पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले की शिकायत 16 जनवरी को सेक्टर 21 में पुलिस स्टेशन में की गई थी। तदनुसार सेक्टर 26 सूर्यनारायण सोसाइटी के निवासी विजय प्रकाश रमाशंकर शुक्ला को दिसंबर 2018 में शिकायतकर्ता के फेसबुक पर एमिली जॉनसन के नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। मुख्य
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भूमाफिया पर अंकुश लगाने के लिए भूमि गबन कानून पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो अब से 10 से 14 साल के लिए अवैध भूमि पर कब्जा करने वालों को कारावास देगा। कोर्ट 6 महीने के भीतर मामले की सुनवाई करेगा। छोटे पुरुषों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए 7 अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसी भी उद्दंड व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी और शिकायत प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए हर 15 दिन में एक अनिवार्य बैठक आयोजित की जाएगी। मामले के निपटारे में तेजी लाने और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया और शहर की खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कठिन समय में अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।